हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी माय करंट ऑनेस्ट नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। मैंने बहुत टाइम से स्किन केयर वीडियो नहीं किया है, सो आई थॉट लेट्स डू इट। एंड मैंने मेकअप भी किया हुआ है, सो आई शेयर स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग आई डू। सबसे पहले तो मैंने चेंज कर लिया है। आफ्टर लॉन्ग डे इट फील्स सो कम्फर्टिंग क्योंकि मैंने सनस्क्रीन लगाया हुआ है, मेकअप भी किया हुआ था, सो आई डबल क्लेंस माय फेस। ऑन सम डेज व्हेन आई एम लेजी टू डू डबल cleansing, I use this 2-in-1 cleanser by Foxtale. It's really good. Today I'll be using this Beauty of Joseon Ginseng cleansing oil. So I take 2 to 3 pump of it on my palm, rub it and apply it all over my face. क्योंकि मैंने वाटरप्रूफ मस्कारा एंड वाटरप्रूफ लाइनर लगाया हुआ था, तो सबसे पहले मैंने आईज पे अप्लाई कर लिया। ये बिल्कुल भी स्टिंग नहीं करता आईज को, दैट्स द बेस्ट थिंग। सो इस तरीके से अच्छे से मैं अपने पूरे फेस को मसाज कर लूंगी। आई एम ऑल्सो रबिंग माई आईज जेंटली। इट जस्ट मेल्ट डाउन ऑल द मेकअप, वाटरप्रूफ मस्कारा एफर्टलेसली। इट फील्स वेरी जेंटल एंड सूदिंग ऑन द स्किन एज वेल। सो डबल क्लेंजिंग से डीप क्लीनिंग हो जाती है स्किन की, जिससे क्लॉक पोर्स इश्यूज, ब्रेकआउट, डलनेस काफी हद तक कम हो जाता है, which फेस वॉश alone cannot do it. इसके बाद थोड़ा सा वाटर लेके मैं इसको इमल्सिफाई कर लूंगी। It turns into this milky texture. This step completely lift off makeup and oil. वाटर से अपने फेस को क्लीन करने के बाद I'll go ahead with this simple face wash. On some days I also use this salicylic based face wash to unclog my pores. So this is the second step of double cleansing, using a face wash to remove all the residue. And this simple face wash is very gentle, effective, non-reactive, and I'm using it since a very long time. बहुत ही अच्छे से फेस को क्लीन कर देता है without stripping away the skin's natural oil, and it's great for all skin type. The next step, I'm using this Plum's Rose Water Toner. It's a very gentle, simple rose water toner, great for beginners as well. Toners helps in balancing the pH level of our skin. It feels very soothing and adds a little hydration and preps my dry skin before using any actives. So I will let it absorb completely and then we'll move on to serum. So for serum, I have quite a few options. I use either niacinamide, glycolic acid or peptide serum. So for today, I'm using this L'Oreal 1% glycolic acid serum. I apply 2 to 3 drops of it. अच्छे से अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेती हूँ and then pat it into my skin. I do not rub it. इसको मैं वीक में 1 से 2 बार ही यूज करती हूँ because it's an exfoliating serum and इसको आपको रात को ही यूज करना है. It removes all the dead skin cells and my skin looks so much more brighter, even toned and glowing. Also, never forget to apply sunscreen during daytime if you use any actives. Next, I'll be using Beauty of Joseon Revive Eye Cream. It has retinol and other nourishing ingredients which is really good for our under eye area. It is super lightweight and non-irritating. It feels very soothing and hydrating under my eyes. It really helps with depuffing my eyes, smoothen fine lines and brightens the eye area. Moving on to moisturizer, for that I'm using this Requel Ceramide and Hyaluronic Acid Moisturizer. Both the ingredients are amazing to support skin barrier, provide deep nourishment and hydration. This is great for dry to very dry skin. मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ and it is non-comedogenic as well. If you have oily to combination skin, you can use the Dot & Key Ceramide Moisturizer. That is also great. And active serums यूज़ करने के बाद ceramide based moisturizer यूज़ करना is very beneficial for our skin. And lastly, applying my favorite lip balm, LANEIGE Lip Sleeping Mask. This works great if you have dry, chapped lips problem like mine. My lips feel so soft, smooth and plump in the morning. During daytime, I use other lip balms as well, but night mein I love using this one. So yeah guys, that was my current nighttime skincare routine. I hope it was helpful. Let me know in the comment section if you have any suggestions, any queries, and do not forget to subscribe to my channel. I will see you guys in my next video. Tab tak ke liye take care. Bye.